then a home of Rmn is a set of all maps such that f is from M to N is an R module homomorphism. And what we have seen that this home it's itself an R module is also an R module. Also, we have computed a few examples of home. We have seen another example, which we can say like a theorem that home of Zn to Zm Z is isomorphic to Z of D, where D is the GCD of Mn. So now this is an exercise and we need to show that this thing holds. So class, any idea that how can we prove this thing? कोई किसी के पास कोई आइडिया हो, कोई चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा हो? अलीना, मिसबा, सर पहले तो मैप डिफाइन करना पड़ेगा ना? नहीं, हाँ मैम, आप लोग को वो वाला प्रूफ याद है वो जो आपने ग्रुप के लिए किया था? ठीक है, एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन दैट थिंग ना, वो जो हमने ग्रुप के लिए किया होता। हाँ, वो जो R to R के लिए किया था, होम R to R is isomorphic to R, वो वाला? नहीं हो, ये वाला नहीं, ग्रुप के लिए अगर हमने Z, अभी तो हम ZM की बात कर रहे हैं ना। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये प्रॉब्लम कहूँ, आप लोग को ये याद है कि दैट आपको ये प्रॉब्लम दिया जाए कि फाइंड ऑल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स। असल में प्रॉब्लम यही है कि यू नीड टू फाइंड आउट ऑल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Zn to Zm। जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो आपका काम हो जाएगा। तो एक्चुअली तो हम लोग ये काम कर लेंगे। तो पहला जो टास्क है वो यही है दैट वी नीड टू फाइंड आउट ऑल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Zn to Zm। तो इसकी मैं बात कर रहा था, ये वाला आपने कि इसका अगर आप लोग को याद हो तो हमने कैसे किया था। ओके, तो जस्ट ट्राई टू रिकॉल कि हम लोगों ने ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल भी करवाई थी Z12 to Z30, आप अपने कॉपीज में खोल के भी देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने क्या काम किया था दैट इफ दिस इज Z12 and this is Z30, then if we know the image of one which is equal to A, then we can compute the image of any element। या यहाँ पे Zn कह रहे हैं, इसी तरह यहाँ पे Z अच्छा, क्लास जस्ट वेट करेगा, मैं काफी देर से अपने टूल बार पे मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, उसको मैं सेट नहीं कर पा रहा। अच्छा, सेट हुआ है, एक मिनट। ओके, so what we have seen that अगर मैप हमारा इस किस्म का हो Z12
or Zn to Zmo, that if we want to compute a homomorphism, then if we know the image of one, then we can compute the image of any point which is equal to Ax. So the image of one would induce a homomorphism from Zn to Zm. So if F is a homomorphism, then in the image of one it is equal to A, then the image of any x is equal to x. It means that this map homomorphism is induced by A, where A is an element of Zm. अब हम लोगों ने वहां पे भी काम किया था कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए फाइंड आउट करने की कोशिश करी थी, दैट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए. So what is the condition of on A? That order of A divides M, and also order of A divides N. So from the group theory, we did this thing that, and from this information, first we computed possible orders of A, and from possible orders of A, we computed the possible values of A. So this was a procedure, just try to recall. That was और हमने इस प्रोसीजर को Z12 Z30 के लिए अप्लाई किया था. But now we need to apply this procedure from Z12 to Z30. So there are 3 steps of the proof of the exercise. First, we will show that all group that we will compute group homomorphisms from group homomorphism from Zn to Zm. Okay, then we show that that this okay, that group homomorphism from Zn to Zm, इस set को हम compute करेंगे. Let's say इस set को आपने G का नाम दे दिया. This set it is equal to G, set of group homomorphism. And then we will see that since a group homomorphism from Zn to Zm is also a Z module homomorphism. Therefore, we will see that set of all अच्छा, हम यहाँ पे ये भी आपकी बात प्रूफ करेंगे कि first we will compute the group homomorphism from Zn to Zn. Then actually we will show that the cardinality of this thing or the order of this group, it is equal to D, where D is the GCD of Mn. And also we prove that G is a cyclic group. Also we will see that G is a cyclic group. So in the next step, we will prove that since group homomorphism from Zm to Cm is also Z homomorphism Z, that's why ये जो set of group homomorphisms होगा from Zn to Zm, ये home of Zm to Zn के बराबर हो जाएगा. And in the last step, we will show that actually G is a cyclic group of order D. So that's why G is group isomorphic to. हम last step में ये show करेंगे कि that G is group isomorphic to ZD, and every group isomorphism from G to ZD, which are a abelian group, is a Z module isomorphism, which implies that or in fact हम ये show करेंगे that home वाला जो है it is group isomorphic to ZD. So since every group homomorphism is a Z module homomorphism between abelian group, so that's why every group isomorphism
is also a group, is also a Z module isomorphism between Z modules. So ये steps होंगे, इनमें पहले steps में competition ज़्यादा है, बाकी दो steps trivial किस्म के हैं. But ये अच्छा है कि आप लोग को मालूम हो कि पहले first we will compute all group homomorphism from Zn to Zn to Zm, and then the set of all group homomorphism is a cyclic group of order D. We will show. After it, since every C module homomorphism is also, since any group homomorphism is a Z module homomorphism, that's why the set of all group homomorphism from Zn to Zm is equal to the set of all R module Z module homomorphism from Zn to Zm. And in the end, since the set of all group homomorphism is a set of all group homomorphism, in the step 3, we'll show that since the set of all group homomorphism is a cyclic group of order T, that's why the set of all group homomorphism is group isomorphic. Is group isomorphic to CD, which implies that home Z is Z module homomorphism to the Z module ZD. Okay, now for the first step is a crucial step that we need to show that the set of all group homomorphisms is a cyclic group of order D. तो इसके लिए हमें मेरे उस पूरे सेट को कंप्यूट करना पड़ेगा, और उसके लिए मैंने आपको प्रोसेस रिवाइज करवा दिया था that a group homomorphism from Zn to Zm, it is in the form of f of a, where f of a is defined in this way and a is an element of Zm. Okay. Now possible values of a हमें क्या कंप्यूट करनी है? जी रिकॉर्ड हो रहा है. वेट करें एक मिनट, मेरा लेक्चर प्रॉब्लम आ रहा था, मैं स्क्रीन शेयर करवा दूंगा. Okay, so we need to compute possible values of share करवा. Possible values of A. कौन से लोग आए हैं? Now there is a okay. For this purpose, first try to see that we know that under a group homomorphism, if 0 is an element of Zn, so under group homomorphism, what is the image of 0? Image of 0, it is equal to 0. Okay, because this is a property of a group homomorphism that the image of a 0 element is always a 0 element. So we will use this fact. Now we know that in Zn, what is the class of n? In Zn, what is the class of n? The class of n, it is equal to 0n. It means that f of n किसके equal आ जाएगा? F of n, it is equal to f of 0, and f of 0 किसके equal आता है? 0 के equal आता है. And by definition, it is equal to n bar into a. By definition, it is equal to n bar into a. So what is the meaning of this thing? That we know that n bar a, it is equal to 0 in Zm, because we know that the
equivalence class or the equivalence class or the of n, it is 0 in Zn. So this equation holds in Zn. So you can say that in Zn, n bar it is equal to z bar. Therefore, image of f of n bar is equal to image of z bar, which is equal to 0 bar. And by definition, image of n bar is equal to n bar a bar. It means that n bar a is equal to 0 in M. So if something 0 in M, so it's Zm. So it means that that thing is if the equivalence class of an element in Zm it is equal to 0. It means that that element is divided by M. अगर M में किसी एलिमेंट की जो क्लास है वो 0 के बराबर है, तो इसका मतलब M से डिवाइड होगा. So it implies that M divides Na. Okay. Now this is also a result of a number theory that if M divides Na and if D is a GCD if D is a GCD of Mn, then M over D divide N over D over M. इसको बहुत easily आप लोग देख सकते हैं that why this result hold, because अगर M Na को डिवाइड करता है इसका मतलब ये कि Na के साथ I will multiply something if I will multiply something with M, then I will get Na. तो दोनों साइड्स को अगर मैं D से डिवाइड कर दूं तब भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा. So that's why M over D divides, because D GCD है तो D N divides D, sorry D divides N and also D divides N. So this is a very simple result. And also we know that what is the GCD of M over D or N over D? इन दोनों का GCD किसके बराबर होगा? 1 के इक्वल होगा. So GCD, so it implies that so if M over D divides the product of two elements and the GCD of these two elements it is equal to 1, तो इसका मतलब क्या रिजल्ट निकलता है? relatively prime है. ये दोनों का relatively prime है, यानी कि if A divides BC और A और B relatively prime है, तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है? जी अलीना, सुना आपका एक ग्रेड आएगा. हाँ ओके जी, ये बड़ा आसान सा रिजल्ट है कि अगर A डिवाइड्स, अगर देखें अगर A डिवाइड्स BC कर रहा है और इन दोनों के दरमियान कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है, मगर A अगर BC को डिवाइड तो इसका मतलब A डिवाइड C हो जाएगा. सिंपल. तो इसका मतलब M over D divides A. So this is the main condition which we derived, that actually what is the possible values of A. So this is the main condition which we defined on A, because we are looking for possible values of A. जितनी possible values for A होंगी उतने homomorphisms. ये हमने पहले भी देखा था. But now how can we compute possible values of A? Using this condition. Using this condition we can compute possible values of A, that actually M over D divides A. तो अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं possible values of A क्या हो सकती हैं. That if M over D divides A, इसका मतलब ये कि it means that A it is equal to K times M over D. अब K कहाँ से वैल्यू करेगा? देखें let's say K की वैल्यू exactly 1 भी हो सकती है, बिकॉज अब डिवाइजर से निकालना है ना. जब एक नंबर दूसरे नंबर को जब डिवाइड यानी कि कर रहा है तो इसका मतलब जो जिस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, अप टू सो ऑन. तो जैसे ये इसकी जो मैक्सिमम जो K की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? D के इक्वल होगी, बिकॉज फॉर K इज इक्वल टू D, फॉर K इज इक्वल टू D A इट इज इक्वल टू K इंटू D M over D which is equal to 0. यानी कि उसके बाद 0 आएगा एंड आफ्टर 0 के बाद अगर आप दोबारा नेक्स्ट वैल्यूज लेंगे तो वो दोबारा ये वाली वैल्यूज रिपीट होना शुरू.
उसकी उसकी रीजन क्या है कि वेन एवर यू विल टेक k इज इक्वल टू d प्लस 1, तो जैसे k इज इक्वल टू d प्लस 1 लेंगे, सो a इज इक्वल टू d प्लस 1, या हाँ m ओवर d लेंगे, सो जस्ट ये आएगा d m ओवर d प्लस m ओवर d एंड यू विल जस्ट गेट m ओवर d। तो m ओवर d तो k इज इक्वल टू 1 के लिए भी आ रहा था, तो एक्चुअली यहाँ से k की वैल्यूज कितनी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k कितनी आ गई, m ओवर d हमारे पास आ गए, एंड देन 2m ओवर d, 3m ओवर d एंड अप टू सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास d माइनस 1 m ओवर d, और जैसे ही मैं k की वैल्यू को d पुट करूंगा तो d से d कैंसिल होगा तो m आ जाएगा, और m की क्लास gm में किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है, तो 0। तो ये पॉसिबल वैल्यूज मेरे पास आ गए। So there are actually d possible values of, so there are d possible values of a, and why this thing hold, because there are d possible values of k, and d possible values of k क्या है, because जैसे k d तक आएगा, k is equal to d में a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमने देखा a की वैल्यू 0 की बोला, बट जैसे ही कि हम d प्लस 1 में जाएंगे तो आपको a की वैल्यू क्या मिलेगी, m ओवर d, तो d प्लस 1 में आपको k की वही वैल्यू मिलेगी, a की वही वैल्यू मिलेगी जो k is equal to 1 के लिए मिलेगी। In the same way for d plus 2 you will get the value of a for which we got for k is equal to 2। तो एक साइक्लिक ग्रुप की तरह ये चीज है कि एक पॉइंट के बाद चीजें दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। So these are possible values of a, and these possible values of a is defining set of group homomorphisms. These possible values of a defining set of group homomorphisms from Zn to Zm. So there are d possible, और वो सेट किसके इक्वल होगा, इस सेट को मैंने g का नाम दिया था, दिस सेट g, सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, f of 0, f of m over d, f of 2m over d, because every a is defining a map. So there are d possible values of a, so it's mean at least you can say that there are d maps, you can say that there are d maps from Zn to Zm. So initially you can say that the cardinality or the order of this thing is G. But now in the first step what we need to show, जैसे याद करें first step में क्या show करना था, we need to compute group homomorphisms from Zn to Zm. First we need to show that the cardinality or the order of this group, it is equal to D, where D is a GCD of Mn, and then we need to show that G is a cyclic group. So we already computed possible values of A. So there are d possible values of A, which shows that there are d possible homomorphisms from Zn to Zm. That is the order of this group, it is equal to D. Now we need to show that this is a हमारा task है that this G is a, because count कर लेना 1 से लेके यहाँ पे D तक जाएगा ना, देखिए A की कितनी possible values हैं, d possible values है ना A की, देखिए यहाँ पे k1 जा रहा था, बिकॉज दे आर k पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, देखें k की पॉसिबल वैल्यूज कितनी थी, d थी, तो जैसे ही इन वैल्यूज को पुट करूंगा तो यहाँ पे a की पॉसिबल वैल्यूज कितनी निकलेंगी, d निकल आएंगी, तो d होंगी, तो इसका मतलब दे आर d पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, इसका मतलब दे आर d पॉसिबल होमोमॉर्फिज्म्स। सो यू कैन से दैट एक्चुअली d पॉसिबल होमोमॉर्फिज्म्स from Zn to Zm. Now we need to show that this G is a, we need to show that this G is a cyclic group. So what do you think, why this is a cyclic group, and if this is a cyclic group, what is the generator? अच्छा, just try to recall that यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इस चीज को इतना elaborate नहीं किया, but just try to see this self that G is a group.
that ये जो set of all possible homomorphism, group homomorphism है, this thing is a group and the order of this group. तो अगर ये ग्रुप है तो इसमें जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन के एडिशन का ही है. तो इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि क्यों साइक्लिक ग्रुप है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ मैप m over d, अगर आप इसको किसी और दूसरे मैप के साथ ऐड करवाते हैं, 2m over d के साथ ऐड करवाते हैं, व्हाट यू विल गेट, आपको कौन सा मैप मिलेगा? 3m over d. वाई? देखें, जब हम किसी भी मैप्स को ऐड करते हैं, जब किसी भी मैप्स को जब ऐड करते हैं तो एक्चुअली हम उनको पॉइंट वाइज एडिशन करते हैं, वी नो. तो जैसे ही मैं इनको एडिशन करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, fm over dx आ जाएगा प्लस f2m over dx आ जाएगा, और इसका इमेज क्या होगा, m over dx, और इसका इमेज क्या होगा, 2m over dx, और उनका टोटल इमेज क्या हो जाएगा, 3m over dx. इसका मतलब if you add fm over d plus 2f2m over d, so you will get a map f3m over d. So actually, class, what is the point that addition कैसे define होती थी? Addition is defined. So addition कैसे define, या addition on G कैसे define हो रही है? That if you have an element, let's say km over d plus k dash m over d, तो just क्या हो जाएगा, it is equal to k plus k dash m over d. तो इस तरह से addition define हो रही है. So under this addition you can see that this is a group. But why, अब now try to see that why this group is a, ये तो just एक comment था that how can we see G as a group. So what is my claim that now this G is a cyclic group. तो अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो इसका जनरेटर क्या नजर आ रहा है, कौन सा एलिमेंट इसका जनरेटर नजर आ रहा है, कि किस एलिमेंट के साथ मैं उसको ऐड करता हूँ इटसेल्फ कि पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट हो जाएगा. सिंपल है इसमें, m over d. So actually m over d is the generator of the group, because m over d को जब मैं itself मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ऐड करूंगा, सॉरी, so f of m over d plus m over d किसके इक्वल आएगा, f of 2m over d. इसको 3 टाइम्स ऐड करवाऊंगा, so what I will get, f of 3m over d. इसको अगर मैं किसी भी k टाइम्स ऐड करवाऊंगा तो k, it's mean that this group G, which is equal to f0 fm over d up to so on f of d minus 1 m over d. Actually this is a this group is generated by f of m over d, that is G is a cyclic group of order d, where d is a GCD of Mn. So now from the course of group theory we know that every cyclic group of order d is isomorphic to CD. So which implies that G is group isomorphic to ये CD जो भी cyclic group होता है, अगर cyclic group infinite होता है, it is always isomorphic to C, and if the order of the cyclic group is D, then it is isomorphic to CD. So it is isomorphic to ZD. तो यहाँ से हमारा स्टेप कंप्लीट कर लिया, that first we computed the set of all group homomorphism from Zn to Zm, which is a cyclic group of order D. That's why it is isomorphic to Zd. Now अगली चीजें trivial है, because we know that every group homomorphism, so whenever so step 2 में just हम लोग ये बात देख लेना that since any group homomorphism जो इस टाइप की होगी from Zn to Zm
is a group homomorphism is also is a Z module homomorphism. जो भी मैंने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कराई है, और अगेन आप k की वैल्यू ले सकते हैं, that k is varying from 1 to d. ठीक है, no problem नहीं है. Is a Z module homomorphism. It means that set of all group homomorphism. It means that set of all Z module homomorphism from Zn to Zm. It is also isomorphic to this set, which I defined earlier, f of m over d, and up to so on f of d minus 1 m over d. Because जितनी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स का जो सेट है वो सी मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म्स भी का सेट होगा, तो दैट्स व्हाई दोनों ग्रुप इक्वल हो जाएंगे. एंड अच्छा, जस्ट हमें बात पता है कि अगर एक मैप दो जी मॉड्यूल्स के लेट से एम एन एन, अगर दो इबिलियन ग्रुप्स हैं एंड फाई इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, यानी कि ये एक इबिलियन ग्रुप है, ये भी इबिलियन ग्रुप है, एंड फाई इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म. तो अगर ये ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म है, सो इसका मतलब ये सिंस एवरी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इज अ जी मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, तो ये जो मैप होगा ये जी मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म होगा. सो implies that this phi is also a, एक एज अ मॉड्यूल्स भी ये दोनों क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे. इज अ जी मॉड्यूल आइसोमॉर्फिज्म. तो इसका मतलब क्या हुआ, डेट इज if G is isomorphic to H as a group, where then G is isomorphic to H as Z modules. तो इससे क्या, इस कमेंट से हमें क्या पता चलता है, that if that is if home of Z, we know that it is isomorphic to ZD as a group. It implies that home of Z, Zn comma Zm, as a, it is isomorphic. It is also isomorphic to ZD as a Z module. That if abelian groups are isomorphic as groups, then they would be isomorphic also as Z modules. So, and this proves the claim, and we know that D is a GCD of Mn, that the set of all homomorphisms. So class, इसमें सिर्फ ये थ्योरम ही नहीं है, इसमें अब आपको एक पूरा एल्गोरिथम भी दिया हुआ है that how can we compute. पहले तो हमने एक ऑर्डर्स वगैरह के जरिए कंप्यूट किया था. Now it also defining an algorithm. अब मैं आपको जब भी कहूँ कि लेट से ग्रुप होमोमॉर्फिज्म भी निकालना है, तो लेट से यहाँ इसमें जो एल्गोरिथम डिफाइन किया हुआ है मैं उसी तरह से निकालता हूँ. अब मैं अगर आपको कहूँ कि आपको Z12 और Z30 के दरमियान तमाम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म निकालना है, okay, we know that this group is isomorphic to Z6, where 6 is a GCD of 12 and 30. मगर मैं सेट को डायरेक्टली कंप्यूट भी कर सकता हूँ. एक तो हमने पहले अपने मेथड से कंप्यूट किया था, एक हमने अब मेथड यहाँ पे देखा है कि ये सेट जनरली किसके इक्वल होता है, f of 0. देखें यहाँ पे हमने इस सेट को ऑलरेडी पूरा कंप्यूट किया हुआ है, f of 0, f of m over d, f of 2m over d. तो ये अब सेट कैसे देखें, अगर मैं इसी मेथड को यूज करूँ तो अब ग्रुप थ्योरी में भी आपके काम आ सकता है ये चीज, कि पहला मैप क्या हो जाएगा, f of 0. अब यहाँ पे m क्या है, 30 है, और d क्या है, 6 के बराबर है. तो दूसरा मैप क्या होगा, f of m over d, that is 30 over 6.
which is F5, and then 2m over d, 10, and then 3m over d, and then 4m over d, yeah, 20, then 5m over d, 25. उसके आगे आप जब करेंगे तो दोबारा 0 आ जाएंगे। देखिए अब आपने डायरेक्टली कंप्यूट कर ली, वहां पे हमने बड़े ऑर्डर्स निकाले थे, पहले ऑर्डर पे कंडीशन निकाली और ये कंडीशन निकाली, बट नाउ, और ये सिर्फ उसमें ही नहीं, आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ईजी है। दैट्स व्हाई आपको यू नो द फॉर्मूला, नाउ यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला आल्सो इन द कोर्स ऑफ ग्रुप थ्योरी टू कंप्यूट ऑल। इनफैक्ट ग्रुप थ्योरी के अंदर भी आप कर सकते हैं प्रूफ, क्योंकि जस्ट नंबर थ्योरी को यूज किया हुआ है, एंड यूजिंग द नंबर थ्योरी वन कैन सी। नहीं है तो वो तो मालूम हो सकता है, जस्ट जीसीडी निकाल के, तो इन दोनों का जीसीडी निकाल लो ना। यानी कि फॉर्मूला तो ये था ना कि m over d, व्हाट इज d? d इज द जीसीडी ऑफ m। तो यानी कि असल में इसमें n का n डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा यहाँ पे, बट ये कि n इस तरह से इन्वॉल्व हो रहा है बिकॉज जीसीडी तो mn का है ना, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि क्या पॉसिबिलिटीज आ रही है। सो एक्चुअली ये सिर्फ आपको ये प्रूफ नहीं कर रहा दैट इट वुड बी आइसोमॉर्फिक टू Z6, it also shows you that how can you compute this group, this group or this module, होम का जो मॉड्यूल है या ग्रुप है, आप उसको कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। क्लास एनी प्रॉब्लम इन द प्रूफ? मेरे से 2 मिनट का ब्रेक देना, गला ज़्यादा सूझे। ओके क्लास, एनी प्रॉब्लम द प्रूफ? No, sir. शहर ईमान फातिमा? No, sir. अच्छा वो नाम अभी अली इनायत कौन है, उमर इमरान। स्टार्ट कर दीजिए। ओके तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक क्लोज होता है। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर मॉड्यूल्स। हम होम के ऊपर आएंगे क्योंकि बाद में जब हम एग्जैक्ट सीक्वेंस के ऊपर होम को अप्लाई करेंगे एज अ फंक्टर, तो ये वाला कॉन्सेप्ट बाद में भी आएगा। इनफैक्ट जो प्रोजेक्टिव मॉड्यूल्स है और इंजेक्टिव मॉड्यूल्स हम बाद में देखेंगे, वो होम्स के जरिए डिफाइन होता है। तो फैक्टर मॉड्यूल है और क्वोशंट मॉड्यूल। सो अगेन इन द course of group theory, what you have seen that with the help of normal group you can construct a factor group. In the section of ring theory we have seen that with the help of an ideal we can construct a quotient ring or a factor ring. But here in this case with the help of any submodule, कोई condition नहीं है। Now let n be an R submodule of M. So now with the help of any submodule you can construct a factor module. So let n be an R submodule of M. So again m over n
n over m, actually it contains all cosets. Now इसमें addition कैसे define होती है? So this is an addition वैसे define होती है. So this is an R module. So this is an R module under the following operations. So we need to define two operations. Number one, addition. Okay, for addition, again, if x, if a plus n and b plus n are two cosets in m over n, then we can add a plus n with b plus n, but just by adding their representatives. Just by adding their representatives, it is equal to a plus b n. Okay, now this operation is well defined because n is an abelian group. Because we know that if something, in order to see m over n as an R module, we need to define addition, and under addition m over n should be an abelian group. But now this operation is well defined because अगर मेरे पास m with respect to addition is an abelian group, so a submodule is also an abelian group with respect to addition. So that's why this operation is well defined, because abelian groups subgroups के साथ जो operation होता है वो हमेशा well defined होता है, because every abelian subgroup is a normal subgroup. जो अगर ग्रुप abelian हो तो उसके सारे subgroups भी abelian होते हैं, वो सब automatically normal होते हैं. In fact, in an abelian group, every subgroup is normal. So this operation is well defined. Since n is a subgroup of an abelian group M, that is n is a normal subgroup of M. So that's why normal subgroup के साथ जब addition define करवाते हैं, so it is always well defined. So next operation is the operation of the scalar multiplication. So what is the scalar multiplication? That if R is an element of ring and A plus n is an element of, sorry? हेलो सर, सर ये चीज समझ में नहीं, आप ये दोबारा समझा देंगे वेल डिफाइंड क्यों है? Okay, in the course of group theory, if you make a factor group with the help of an abelian subgroup or a normal subgroup, then the operation between coset is always well defined. ग्रुप थ्योरी में होता था कि अगर आप नॉर्मल सब ग्रुप के साथ ये एक बिलियन सब ग्रुप हो, उसके सारे सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं, तो वहां पे जब भी आप ऑपरेशन बनाते थे, कोसेट ऑपरेशन बनाते थे, वो हमेशा वेल डिफाइंड होता है. ओके, तो यहाँ पे भी तो जो m अगर एबिलियन ग्रुप है तो उसका जो सब ग्रुप भी क्या होगा, एबिलियन होगा, यानी कि वो जो सब ग्रुप क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा. तो अगर वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो एडिशन क्या हो जाएगी, उसी लिहाज से क्या हो जाएगी, वेल डिफाइंड हो जाएगी. जैसा ये चीज हमने रिंग थ्योरी में देखी थी, बिकॉज रिंग इज आल्सो एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. तो जैसे रिंग के अंदर एडिशन वेल डिफाइन थी, उसी तरह मॉड्यूल्स में भी जो एडिशन हो जाएगी वेल डिफाइन हो जाएगी, बिकॉज रिंग इज आल्सो एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मॉड्यूल इज आल्सो एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. ओके अली? ठीक है. नहीं क्लियर है या उसको और एलिब्रेट करूंगी? क्लियर. So now how can we define scalar multiplication if R is an element of R and A plus M is an element of M over N? Then R into A plus N, it is equal to RA plus N. Now we can see that this operation
we can see easily that this operation is a well-defined operation, because what you need to show to that this is a well-defined operation, that if a plus n it is equal to b plus n, and then we need to show that if we multiply r, then what should be the task, that r into a plus n should be equal to r into b plus n. कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी दोनों सेम ही रहेंगे. So the operation is free from representative. So if these two things are equal, so it means that difference is an element of n. So n is a submodule. So if you multiply any scalar with the submodule, तो इसमें belong करेगा, which implies that Ra minus Rb is an element of n, which implies that Ra plus n, which is equal to Rb plus n, and which implies the task that. So इसका मतलब cosets अगर equal है, then after scalar multiplication में जो आंसर आएंगे वो सेम ही आएंगे. It means that scalar multiplication, the operation of scalar multiplication is free from representatives. So यहाँ पे तभी एक बात होती है that here मैंने कोई additional condition n के ऊपर नहीं ली हुई. N is just a submodule because I just need a submodule property. यहाँ पे सिर्फ मुझे submodule property required थी इस चीज को प्रूव करने के लिए. Otherwise group theory में you cannot construct a factor group with the help of an arbitrary subgroup. You need a normal subgroup to construct a factor group, because normal subgroup के बाद ही operations क्या होता है, well defined होता है. In the same way, in the case of ring theory, you cannot construct a factor ring with the help of an arbitrary subring. You need to take an ideal. वहाँ पे हम subring से ज़्यादा हम ideal लेते थे. We need to take more than a subring. We need to take an ideal to construct a factor group. And why? Because the multiplication, quotient multiplication is well defined if a subring is an ideal. But here in the case of module theory, you can take any submodule, because the scalar multiplication would be well defined for any submodule. So that's why यहाँ पे थोड़ी सी condition relax होती है. Okay. So, Excuse me, sir. Yeah. सर ये सब ग्रुप इसलिए आपको सब मॉड्यूल बोल रहे हैं, या मॉड्यूल में ये एज्यूम ही करते हैं सब मॉड्यूल्स होते हैं. ये सब मॉड्यूल है तो वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सब ग्रुप भी तो होगा ना, क्योंकि एवरी मॉड्यूल इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो उसका जो सब मॉड्यूल होगा वो भी तो सब ग्रुप होगा ना विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. ठीक है सर. इसकी एग्जांपल देख ले. ओके, लेट्स से m को देख लेते हैं, q एज अ z मॉड्यूल देख लेते हैं. q को मैं z मॉड्यूल के तौर पर ट्रीट कर रहा हूँ, and n is a sub module of z. So here we can treat z as a z submodule of q, where z is a z module and q is also a z module. So here you can see that q over z contain elements which are in the form of a over b plus n और प्लस z कह लें. इस ग्रुप को मैं यूज करूंगा बाद में, इस सब मॉड्यूल को मैं यूज करूंगा बाद में कुछ चीजें कंस्ट्रक्ट करने के लिए, कुछ एग्जांपल्स शो करने के लिए. where a over b it is an element of q. So this is a z module. So q over c हमने एक नया मॉड्यूल कंस्ट्रक्ट कर लिया which is a z in this way. So in this way, जब कभी भी आप सब मॉड्यूल लें डिफरेंट उसमें वर्किंग करके आप एक और चले एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, आप जी मॉड्यूल बना सकते हैं. Now for example here
if M it is equal to C, and also we can see that this is a इसको मैं R सब मॉड्यूल ले रहा हूँ या R मॉड्यूल ले रहा हूँ. समटाइम्स ये नोटेशन भी लिखी जाती है कई बुक्स वगैरह में कि CR इस तरह से भी लिखा जाता है, या इसी तरह M मॉड्यूल ओवर R है तो उसको MR भी लिखा जाता है. And N it is equal to R, and this is also an R mod. So here we can define C over R, which contain elements in the form of A plus iota B plus R, where A plus iota B is a complex number. But moreover, we can see that A is a real part. So if we add A, so ये R है, ये A को absorb कर लेगा. So moreover, we can write this group in this form. So because यहाँ पे जितने imaginary numbers है, जितने imaginary parts है, कौन सी? Sorry? हाँ, तो यहाँ पे जितने C over R है ना, तो यहाँ पे सारे कोसेट्स लूंगा ना मैं. तो कोसेट्स के रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से आएंगे? सी में से आएंगे ना, कॉम्प्लेक्स में से आएंगे ना. तो रिप्रेजेंटेटिव A प्लस आयोटा भी किस में से बिलोंग करेंगे? अब नाउ R किस में, यहाँ पे R क्या है इसका? रियल पार्ट है ना, तो A प्लस R क्या होगा? 0 हो जाएगा ना. तो इसका मतलब इस रिप्रेजेंटेटिव को जस्ट I प्लस आयोटा B की फॉर्म में लिख सकता हूँ ना. तो उसका मतलब कि जितने इमेजिनरी पार्ट्स होंगे, तो जितने इसमें एलिमेंट्स होंगे वो आयोटा प्लस बी आर इस फॉर्म में इनके होंगे. तो लेट्स से 2 आयोटा आर, 3 आयोटा आर, तो इसमें ऐसे सारे कोसेट्स आ जाएंगे कि जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होंगे? प्योरली इमेजिनरी नंबर्स होंगे. In fact, moreover, you can try to see that this C over R is R module isomorphic to R. Okay, इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं. अच्छा, जस्ट यहाँ पे देखिए ये कुछ आइडियाज थे जो हमने देखे. इन द सेम वे हमने आइसोमॉर्फिज्म का ये देख लिया that if a homomorphism, we know that if an R module homomorphism is bijective, then it is called an isomorphism. So now we will see the first isomorphism theorem. We will see the first isomorphism theorem, जो जिसकी definition वैसे रही. First isomorphism theorem for modules. So statement उसी तरह से रहेगी जैसे हमारे पास रिंग के लिए थी या ग्रुप के लिए थी कि let F from M to N be an R module homomorphism okay. Then again, what is the statement that M over kernel of F is isomorphic to image of F. अच्छा, before so statement इनके वही रही and और but यहाँ पे ये वाली जो आएगी ये हमारे पास R module homomorphism होगी. But this time they are isomorphic as an R module. Ring के केस में they would be isomorphic as rings. Group के केस में they would be isomorphic as groups, and इनके केस module में they would be isomorphic as R modules. अच्छा, before this thing you can also see from here, यहाँ पे मैं remark लिख रहा हूँ कि जैसे हमें पता है कि कर्नल ऑफ जो होता है वो एक आइडियल होता है, तो इन द सेम वे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं that कर्नल ऑफ F which by definition contain all elements of M
such that f of a is equal to 0 is an R submodule of n, is an R submodule of M, and also image of f, जिसमें इसका मतलब रेंज है उसकी, which contain all elements of n, बल्कि image f, so image of f is also an R submodule of n. So again इनके जो प्रूफ है वो उसी तरह से ही है कि अगर आपने इसको सब मॉड्यूल प्रूफ करना है तो दो एलिमेंट्स अगर इनमें होंगे जो 0 पे मैप हो होंगे तो उनका डिफरेंस भी 0 पे मैप हो होगा, एक एलिमेंट भी 0 पे मैप हो होगा तो उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो वो भी 0 पे मैप हो होगा. तो इन दिस वे यू कैन इजीली प्रूव दैट दीज आर आल्सो सब मॉड्यूल्स. तो स्टेटमेंट ऑलमोस्ट वही है, अप्लाई हमें उसी तरह से इनके करना है. बट नाउ आई विल गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स in which I will show that maybe two things, because in a sense जो देखिए अगर मैं Z मॉड्यूल्स की बात कर रहा हूँ तो जो चीज़ें एज अ ग्रुप आइसोमॉर्फिक है वही एज अ Z मॉड्यूल आइसोमॉर्फिक है. मगर हमें पता है कि हर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं होती, हर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म Z मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म तो होती है, बट नॉट एवरी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म. इसका मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दैट दो चीज़ें Z मॉड्यूल आइसोमॉर्फिक तो हों, दैट इज ग्रुप आइसोमॉर्फिक होंगी तो Z मॉड्यूल आइसोमॉर्फिक भी हो जाएंगे, बट दे विल नॉट बी आइसोमॉर्फिक एज रिंग्स. तो इसकी एग्जांपल मैं एक इलस्ट्रेट करना चाह रहा हूँ. लेट्स से Z iota, let's say M is equal to Z iota, and consider this thing as a Z module. And n it is equal to Z root 2. अच्छा, Z iota को मैं रिंग भी assume कर सकता हूँ. जैसे we know that this is also a ring. ring of Gaussian integers. This is also a ring. And Z iota actually would contain elements which are in the form of a plus b root 2, where a and b are Z. This is also a Z module. And this thing is also a ring. Okay, first try to see that what is our first claim, that Z iota and Z root 2 are isomorphic as Z modules. So for this purpose, we need to construct an isomorphism between these two Z modules. So isomorphism को इतनी difficult नहीं है, because अगर आप इसके elements हमें पता है किस form में होता है, it elements are in the form of a plus iota b, where a and b are Z. और इसके element किस form में, a plus b root 2, where a and b are in Z. So जो map define होगा, a map defined from Z iota to Z root 2 in this way, that phi of a plus iota b, it is equal to a plus b root 2. Okay. Now this map, this is a so phi is a Z module isomorphism. One can check easily that this map is actually homomorphism. चले, homomorphism injective and surjective. Homomorphism मैं proof नहीं कर रहा, ये आप लोग खुद देख लेगा. But why this map is injective? Because इसका जो kernel है वो 0 के बराबर है. Why? Because if you take the image of any element, phi of a plus iota b 0, so it's mean that a plus b root 2 is equal to 0.
which implies that A is equal to 0 and B is equal to 0. So it's mean that A plus iota B it is equal to 0. So अगर आपने एक एलिमेंट कर्नल में लिया है A plus iota B, इसका इमेज अंडर फाई 0 के इक्वल है. इमेज ऑफ दिस एलिमेंट अंडर फाई इट इज E. वैसे इसका इमेज A plus B root 2 आता है, अंडर फाई इमेज इज इक्वल टू 0. And if you equate this thing with 0, then you will get AB is equal to 0. A is equal to 0, B is equal to 0, which implies that A plus iota B is equal to 0. And this thing implies that kernel contains only one element. It is also a surjective map because whenever you will take elements in this form, which is in C root 2, so it has a pre-image. इसका pre-image क्या होगा? A plus iota B is a pre-image. So every element has a pre-image. So such that A plus iota B का जो image होगा किसके बराबर होगा? So one can see easily that this map is a Z module homomorphism, that is Z iota and Z root 2 are isomorphic as Z modules. But now what is my claim that what is my next claim that this Z iota and Z root 2 are not isomorphic as rings. So what could be the reason? कि ऐसा रिंग्स के तौर पर कोई ऐसी चीज बता दें जो प्रिजर्व ना कर रही हो. क्या? हाँ, Z I वो Z root 2. चलिए आप एक काम ये करें कि इसके देखें, जब आप किसी चीजों को दिखाते हैं कि दैट दे आर नॉट कि वो अगर रिंग आइसोमॉर्फिक यानी कि नहीं है, तो क्या कहते हैं, तो कुछ मे बी हम क्या दिखा सकते हैं, कोई प्रॉपर्टीज एक जगह पे होल्ड करी है दूसरी जगह पे ना करी है. बट प्रॉब्लम है कि दोनों कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, वहाँ भी कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है. सो आप इन दोनों के यूनिट्स कंप्यूट करें. सी आयोटा के यूनिट्स तो मैंने कंप्यूट करके बताया मैं, वो क्या है? एंड यूनिट्स ऑफ Z root of 5 कंप्यूट करें, सॉरी Z root of 2. चलिए देख लेते हैं. अच्छा आप ये बताएं कि इसमें क्या, अच्छा कोई एलिमेंट ऐसा बनाए जो यूनिट हो Z root 2. Z root 2 के एलिमेंट्स देखने की कोशिश करें, दे आर इन द फॉर्म ऑफ A plus B. कोई एलिमेंट बताए जो यूनिट हो उसमें. क्या? A1 और B0. ठीक है, इसका मतलब आपने नहीं तो इसमें A0 हो, नहीं तो यहाँ पे अच्छा A1 हो और B0, फिर तो 1 आ जाएगा. चले 1 हो गया, ऊपर भी A1 है तो कोई फर्क नहीं दिख रहा. और चले B0 हो, A-1 हो, वो भी दिख रहा है. अब अगर A0 हो, B को मैं 1 लिखूं तो रूट 2 आ जाएगा, तो रूट 2 है इसके अंदर. चले वो ना रूट 2 है ना माइनस रूट 2 है, वो तो इन्वर्टेबल नहीं. कोई और सा ऐसा एलिमेंट है जो आपको इन्वर्टेबल नजर आ रहा है? सर 1/2 root 2. 1/2 क्या? 1/2 root 2. Z में है ना, तो या root 2 over 2. हाफ तो नहीं ले सकते ना, A और B Z में से है ना.
अच्छा इस एलिमेंट को देखें आप 1 + √2, आपको लगता है ये एलिमेंट इन्वर्टेबल है? इसका इन्वर्स क्या होगा? ये होना चाहिए। तो इसके इन्वर्स, इसका जो इन्वर्स है ये एलिमेंट, ये 0 2 में बिलोंग कर रहा है। तो अगर इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, सो जस्ट क्या आ जाएगा, 1 - √2 ओवर 1 -4 - 3, सो 1 - 2 आएगा, 1 - 2 आएगा। तो जस्ट क्या हो जाएगा, -1 प्लस, तो ये तो बिलोंग कर रहे हैं ना 0 2 में, एंड तो 1 + √2, और कौन से ले सकते हैं? चलिए 4, अभी तो प्रॉब्लम है 4 ऊपर भी आ रहे हैं 4 नीचे भी नजर आ रहे हैं। अगर फर्क आ जाए ना यूनिट्स में तो फिर आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते ना, तो यूनिट्स होने का, आइसोमॉर्फिक होने का सेम नंबर ऑफ यूनिट्स होने चाहिए। अच्छा यहाँ पे नजर आ गया। अच्छा नाउ इस एलिमेंट को आप देखें 1 + √2 होल स्क्वायर, इसका इनवर्स क्या होगा? अब आप इसके साथ कोई कॉन्जुगेट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि ऊपर भी आप 1 - √2 होल स्क्वायर कर दें, नीचे भी 1 - √2 होल स्क्वायर कर दें। ओके, तो आप अगेन नीचे आप देखेंगे कि स्क्वायर आएगा, स्क्वायर के अंदर 1 - 2 आएगा तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 - √2 होल स्क्वायर। तो इसका मतलब एक और आपको एडिशनल यानी क्या मिल गया कि माइनस के 1 - √2 मिल गया था। तो इट्स मीन आप यहाँ पे इस टाइप के ना 1 + √2 होल रेज़्ड टू द पावर n, कोई भी पावर n लेके बहुत सारे बना सकते हैं। तो इट्स मीन दैट दिस इज एन इन्फिनिट, यहाँ पे इन्फिनिट नंबर ऑफ यूनिट्स एलिमेंट्स है और वहाँ पे से फाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट्स एलिमेंट्स है। सो दैट्स व्हाई so this claim implies that Z iota is not isomorphic as a ring with Z root of 4. So again, this example just try to elaborate that there is a difference between Z module homomorphism and a ring homomorphism. तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप अलग-अलग मान के रखें। ओके, नहीं फिर नहीं हो सकता, फिर कह नहीं सकते, फिर आप यूँ कुछ कह नहीं सकते यूनिट्स, क्योंकि कहीं ऐसे ग्रुप आप ले सकते हैं जिनमें 4 दोनों यूनिट्स यानी कि हो, सफिशिएंट कंडीशन यानी कि नहीं। ओके, सो क्लास, थैंक यू।